Good evening, everyone. Welcome to this highly informative and engaging webinar on food safety culture. We are delighted to have each and every one of you joining us today for this insightful session. My name is Karishma and I'm working at Imaza Services Private Limited as Head Training and Compliance. Firstly, I would like to go through some ground rules of the session. First is all participants should be muted. Please raise hand or ask question in the chat box. Second is the session is being recorded. And third is discussion will be held at the end of the session and you can ask any query there as well. Moving forward, I would like to introduce the speaker, Ms. Rohila Hashmat. She have 15 plus years of experience in various sector of leading industries in the field of quality and food safety. She has conducted various audits and training globally and she is a proved training partner for BRCGS and UNIDO. And she has co-founded her own company now, that is Imaza Services Private Limited, which is into consultancy, training, inspection, audit, assessment, regulatory services for FMCG industries. You can visit our website and LinkedIn handle also for more information, address to which will be mentioned at the end of the slides. Now I would like Rohila ma'am to proceed with the webinar. Enjoy the webinar and let's make the most out of this valuable opportunity. Thank you. Ma'am, please proceed. Thank you, Karishma. Thank you so much. So, good evening to all of you. Myself, Rohila Hashmat, and for today webinar, I am your facilitator. So, this is a webinar which is related to food safety culture. So, first thing, before the session, I would like to request all of you, just please keep yourself mute. If you will have any concern, any query, either you can raise your hand or you can just write in a chat box so that one by one we can revert or end of the training session. We can just 15 minutes, 20 minutes, we can discuss your concerns, your queries. So please proceed accordingly. Second thing, time to time we have very informative and interactive polls are there. So please be just silent, and please be most conscious here. So because once we will be just asked the questions in poll, so as a trainer, it's my request to all of you that you all will be get participate here. So now we can start. So first thing is, before start food safety culture, we would like to know that what is food safety, what is the safe food, and how this food safety culture came, and and small things, so that it will be easy for us to get better understand about the food safety culture. So now, um every year, almost foodborne diseases causes are almost 10 in one person they can suffer because of the foodborne diseases. 33 million healthy life years lost per year lost because of this, and then 4 lakh 20,000 deaths because of this foodborne diseases, especially in children less than 5 years, and children account for 1:3 of deaths from foodborne diseases. So this is a basic ratio. So now you can understand what is the severity here over the foodborne diseases. So we have to we have to get focus on the food safety as well as the safe food. So, how we can define the food safety? So, food safety is basically our safety which is taken to ensure that the food is free from harmful contaminants or the substances which can cause illness or injury to the consumer. And this includes everything from farm to fork, either they are any of the foreign material, any of the physical hazards, like your glass pieces, metals, even small hairs also, they can also sometimes be the reason
for the illness and even for the death also. So now the safe food is the food which is fit for human consumption. So now to make the safe food, total four steps we can just follow. Clean your hand, wash your hand, then sanitize your hand. These are the things which we can follow. And then step two, you can separate the veg from the non-veg, allergen from the non-allergen. So these things you can separate, so you get it almost. And then cook at an appropriate temperature, means pre-cooked food if you can serve to the consumer, then it will also cause the illness or foodborne diseases, food poisoning, etc. be happening because of that. And step four is chilling. So in the case of chilling, you have to chill the product in the appropriate time and temperature. So it will be also be, if because if there would be any of the pathogen, even will be have come microorganisms, growth will come if that product will not be get stored in proper temperature, appropriate temperature. So now what is food safety culture? So in current scenario, instead of talking about the food safety, safe food, foodborne diseases, a combined word of a very big and the integrated word which is coming, which can just combine combination of all these small definitions. This is food safety culture. So food safety culture, if we can define the food safety culture, so food safety culture is basically can share the value, belief, and norms that affect our mindset and behavior toward food safety in across and throughout an organization. It means that in an organization, instead of focusing on, like for example, if after 15 days the audit is coming, so we can just immediately do the preparation in the company, documentation, cleaning, trainings of the employees, doing internal audits, inspections, and all these things. So instead of doing all these things, the main concern what the food safety culture is saying, behavioral changes means it should be automatically comes in your behavior, in your mindset, in your attitude, that whether anyone will see you or not, you can by default automatically follow the practices of food safety in your company. And once it will be get automatically be get implemented in your organization, means it will automatically change your mindset and behavior. It means that now the food safety culture is successfully implemented in your company, in your organization. So now, from where the food safety culture came, means from where this word came, food safety culture. So the concept of food safety culture is new, means this word is new, but the idea of food safety has been around for the centuries. Throughout history, people have recognized the importance of safe food practices to prevent illness and promote the health. So most of you are all in the industries. FSSC 22000 implemented in your company, your site, your and even maybe few of your are working in the organization which are certified by BRCGS issue 8, issue 9. So now food safety culture is recently now included in FSSC version 6 also, and it is a very important topic. Again, I am repeating, in this new version of FSSC version 6, food safety culture is now introduced in a very detailed way. So now you can better understand that what is the importance of food safety culture, not only in now in BRCGS, even an overall food safety management system. So in 1906, US FDA established to enforce the Pure Food and Drug Act. It was happened in 1906. In 1990, the Food Safety Act in the US, due to several cases of foodborne illness have been recorded. 1990 and 2000, the concept of food safety culture began to emerge. Means it started, the people started
slow discussions about the food safety culture in the organization. But the exact word it was not there, but they started working on things. Now in 2005, ISO published the first standard on food safety culture, ISO 22000. So now GFSI and BSI have developed their own safety culture standards and the guidelines. Today, food safety culture is recognized as a critical component of food safety management. It is essential for preventing foodborne illness and ensuring the safety and quality of the food supply. So now, what this history is saying? History is saying that from the very previous since 1906, the food safety word started, the people started talking about the food safety and how to get implement the food safety in the organization. They started discussions on the trainings, internal audits, second party audits, management review meetings, implementation, small parts. But the exact word of food safety culture, it was initiated almost in 2000 and and if we can very recently in BRCGS and FSSC standards. So now in the organizations, in the company, if now as an expert of food industry, you cannot use the word I want to implement the food safety in the organization and all. You can now use the word I want to successfully implement the food safety culture in the organization, which means you have to work when no one can see, and it only happen if it will become automatically in your mindset, in your behavior. If any questions, any queries came, then you come in and you please note down in your chat box, or you can just raise your hands. Why food safety culture means why food safety culture is required, why it is very important topic now why the people started discussion about the food safety culture. So what are the reasons why the food safety culture is important? Prevention of contamination, it can prevent the contamination. uh, Considering the customer's expectations, see, I can give you one example. For example, you are a supplier of a company like for example, you are a supplier of a company like Nestle. Okay, so what the Nestle is expecting, previously it was like that your buyers can say, no. If you are FSSC 22000 certified, if your company is BRCGS certified, so we can start supplying. So we can start the supply from your organization. But now scenario is changed. Now the your buyer is expecting that whether we can whether means the you have to implement the system in your company, in your organization up to that level. So whether we can purchase or someone else can purchase, there is a uniform culture implementation in your organization. It means all of your employees, all of your workers, all of your stakeholders should be automatically mold themselves, change themselves as per the food safety culture or as per the food safety requirements. And for that, there is a standard requirement that for the same reason there should be automatically behavior, attitude and mindset changes. Whether the buyer like Nestle come to the factory, they can purchase, they cannot purchase, but this is in our system where that we can automatically implement the system in our organization, considering the high customer expectations. Prevention of foodborne illness, because if we can implement the food safety culture in our company, so automatically the foodborne illness can be reduced. Food recall. So suppose if there should be any
recall in the organization or withdrawal in the organization. So there you should have first thing. See, food recall can say towards your first thing. If there is any recall or any withdrawal, then you should have complete proper system so that your product will be better traced and it will not reach to any other of your distributors. And second thing in this, if we can implement the proper system in your company. So because right now the food recall incidents and complaints are increasing more and more. So now to reduce the food recall problems, food recall issues and complaints, we can implement the food safety culture in the organization so that these recall complaints can be get reduced. Compliance with regulations. If we can successfully implement the food safety culture, it will change the mindset, it will change the behavior. So automatically the compliance, the regulatory compliances can be get fulfilled. Supply chain transparency. There should be a proper transparency in the supply chain, and if you can successfully implement this food safety culture, then this supply chain, there should be a proper transparency in your supply chain. It can protect our brand reputation also, because if number of customer complaints will decrease, your customer expectations will meet, your foodborne illness will reduce, food recall reduce, regulatory compliances can fulfill, then automatically your brand reputation can also be get protect. Monetary loss. So even from monetary loss also, it will be get, it is useful for us to reduce the monetary loss. So these all are the things, these all are the reasons, so that food culture, safety culture is important and it should be get implemented in the industries or in the organizations. Actually, what happened, what is the practical approach, what is happening in the industries, what is happening in the companies? Basically, what the people can understand that food safety is the responsibility of the food safety team leader or the food safety team members. So, other than these team members and FSTL, in most of the companies, other people will not be get directly involved or will be get so much interested to get involved in the implementation of food safety. But if the food safety culture will be get implemented, then automatically it will change their mindset, their behavior. So each and every person will be getting interest in the implementation of food safety culture in the company, in the organization. It can avoid the illness and other cost of mistakes. A trustworthy product and brand, if the food safety culture is successfully implemented. Safe behavior makes safe food. Of course, if your behavior is good, suppose your company is successfully implemented the food safety culture. So even if your workers who can just move inside the production area in the shop floor, and if they can see that some tools are present in one corner of the production area, and if it is in their behavior, so automatically they can just take it and just place it in the right position. If the food safety culture is not properly implemented, it means that it cannot change their behavior. So what happen if they will see the tool, so immediately it comes to their mind, no, this is not my responsibility, this is responsibility of some that XYZ person, so why I will be get bothered. So this thing we need to change. This is exactly called as the implementation of food safety culture, and it will be get implemented once the behavior and mindset and attitude will be get changed towards the food safety in the team and the team members. So now, what are the international and the domestic regulations are involved here? International regulations like Codex, International Food Safety Standards, GFSI, WTO agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures. So these are the international regulations who are involved in this food safety culture. Local regulations, they are involved and even it is implemented also. Food Safety and Standard Act 2006 in India. If I'm talking about the local regulations here, so it means that local regulations meet the domestic regulatory requirements of India here.
different countries have different requirements. So if someone of you from some other country, another country, so in that case the local regulations means your country requirement. So here I am talking about the requirements of India. Food safety and standards, licensing and registration of food businesses, food safety and standard regulation 2011, and food safety and standard packaging and labeling regulation 2011. So these are the basic requirements, local as well as the international requirements. So now very important point, elements of the food safety culture. So what are the elements? We can discuss. This is very important slide. We can discuss here one by one all the points here. So you get the idea. So now what are the elements of food safety culture? Means, for example, you are working in some XYZ company and you want to successfully implement the food safety culture in your company, in your organization. So what are the different elements in which you have to work on, and after that, after they are successful working on that elements, you can say now the PRC food safety culture, sorry, food safety culture is successfully implemented. So before it, we can start. I have some one or two polls questions are here, and it's my request. Okay, so one query I have received. Someone is asking that can you please explain in Hindi also? So what can I do? We can mix the language. Mixed language is okay, Raju. Okay, so fine. Great. सो अभी कुछ पोल क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस आंसर रहे बीच में तो हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं। थोड़ा एज ए ट्रेनर मेरे को भी समझ में आता है भाई कि आप लोग पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं, ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। सो नाउ फ्यू क्वेश्चंस आई एम आस्किंग, फ्यू पोल क्वेश्चंस आर देयर, आप लोग उनके रिप्लाई दीजिए, आप लोग उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। देखते हैं कि कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है, कैसे हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ one by one I can release few poll questions. So first poll question is, and I am expecting from all of you, you please all reply here for these poll questions. So now first question is, और आप सबको रिप्लाई देना है, there is only 10 seconds to get reply. Which is the first ISO standard published on food safety? Now I am expecting the answers from all of you. You all please reply here. Only 5 seconds are pending. 5, 4, 3, 2, 1. So now I can show you the answers. What now I can share the results. See, 59% ISO 22000, 38% 9000, and 3% 14,000. So basically, yes, ISO 22,000 is the first food safety standard which was published in 2005. So this is the right answer. Now, again, one question is there. Again, I am asking one more question. You please, I am expecting the answers from all of you because I have seen almost 44, 45 participants are here. So I am expecting the answers, please. Second question here is, why food safety culture is important? Single choice answer, 15 seconds for this question. Prevention of contamination is the first one. Brand reputation,
avoid the monetary loss, and all of the above. 10 more seconds are there. From 43, 44, I am receiving the reply from 30. 14 आपको सही आंसर पता हो चाहे नहीं पता हो, एटलीस्ट आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, बिकॉज पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है टू गेट अंडरस्टैंड आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बेटर आंसर सही पता हो नहीं पता हो आप लोग प्लीज यू कैन रिप्लाई. 5 more seconds are there and expecting the reply from all of you. अगेन 5 से 6 लोग हैं इस ट्रेनिंग में जिन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है. यू प्लीज रिप्लाई. ओके, so almost result is in front of you. Almost 89% all of the above. 11% prevention of contamination, and yes, the right answer is all of the above. So food safety culture is important for prevention of contamination, brand reputation, avoid monetary loss. All these are the right answers. I can just give more poll question. Very good and very important question. Food safety is responsibility of production factory manager, food safety manager and everyone. So बताइए फूड सेफ्टी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आप में से मोस्ट ऑफ यू आर जस्ट वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज, तो आप लोग के हिसाब से आप लोग की क्या सोच है कि फूड सेफ्टी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोडक्शन मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, फूड सेफ्टी मैनेजर एंड एवरीवन. 5, 4, 3, 2, 1. So now answer I can share. Yes, food safety is responsibility of everyone. और अगर हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझता है, अगर हमारा ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि फूड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एवरीवन की, और ये हमारे बिहेवियर में, हमारे एटीट्यूड में और हमारे माइंडसेट में अगर आता है, इट मीन्स दैट हमने हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फूड सेफ्टी कल्चर को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है. एंड दिस इज द मेन विजन, दिस इज द मेन गोल एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी. सो नाउ अगेन वी आर कमिंग टू द स्लाइड्स, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं ऑलमोस्ट अदर क्वेश्चंस. So now what are the elements? First thing is communication. सो फूड कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है दैट इज कम्युनिकेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉरी कम्युनिकेशन? सो कम्युनिकेशन का मतलब ये यहाँ पे ये है, इस यहाँ पे इसको देने का पर्पस ये है कि मतलब अगर आपको एक यू ऑल प्लीज म्यूट योर सेल्फ. युगांक अग्रवाल, या थैंक यू सो मच. ओके, सो मेन फूड सेफ्टी कल्चर को इम्प्लीमेंट करने का पर्पस ये है, अगर हमको देखना है, हम चाहते हैं कि फूड सेफ्टी कल्चर हमारे पास सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो, तो इसके लिए सबसे चीज है कम्युनिकेशन हमेशा ट्रांसपेरेंट होती है. ट्रांसपेरेंट सीनियर मैनेजमेंट से मैनेजमेंट तक, मैनेजमेंट से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से सुपरवाइजर एंड देयर डाउन स्ट्रीम्स which is related to food safety. फूड सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो भी आपके स्कोप आती हैं, वो वहां पे आपका कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. देयर शुड बी नथिंग हाइड एंड सी. मतलब फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू वन एग्जांपल. आपने अपने प्लांट में सबको बोल दिया है कि भाई, सॉरी, जो हमारे सीसीपी ऑपरेटर है उसको आपने बोल दिया है कि भाई सीसीपी जो तुम आपका क्रिटिकल सीसीपी है आपका मेटल डिटेक्टर, आपने ऑपरेटर को बोल दिया कि भाई मेटल डिटेक्टर का लिमिट जो है वो ये एक्सीड नहीं करना चाहिए. उसके बाद बस उसको ये बता दिया आपने कि ये एक्सीड नहीं करना चाहिए और वो उसको फॉलो कर रहा है.
उसके बाद उसको ये नहीं पता है कि सीसीपी होता क्या है, अगर ये एक्सीड कर गया तो इससे क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, उसका प्री नहीं पता, उसका प्रो नहीं पता, बट उसको बोल दिया गया है तो उसको फॉलो करना है। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, उसको चीजें नहीं बताई गई हैं, उसको नहीं पता, उसको उतना ही पता है जितना उसको बोला गया, वो उसको फॉलो कर रहा है। तो इस केस में, इस सिचुएशन में इट इज नॉट पॉसिबल कि एक सक्सेसफुल फूड सेफ्टी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो। बिजनेस प्रायोरिटीज, हमको जब फूड सेफ्टी कल्चर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है तो हमें हमारी बिजनेस की प्रायोरिटीज को भी फोकस करना पड़ेगा। हमारी बिजनेस की प्रायोरिटीज क्या कहती है, हमारा सिस्टम क्या कहता है, मतलब ओवरऑल द सिस्टम इज सेइंग फूड सेफ्टी कल्चर आपको एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनाना है। ऐसा नहीं है कि चूंकि फूड सेफ्टी कल्चर हमको इफेक्टिव चाहिए तो इसके लिए हम मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल फूड सेफ्टी कल्चर अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है तो स्टैंडर्ड कहता है कि फूड सेफ्टी पॉलिसी की नॉलेज सबको होनी चाहिए, राइट। ये एक बहुत ही ज्यादा एक कॉमन सा एग्जाम्पल है और इंडस्ट्रीज में देखा जाता है कि फूड सेफ्टी कल्चर अगर आप चाहते हो कि अच्छे से इम्प्लीमेंट हो तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी को फूड सेफ्टी पॉलिसी की नॉलेज होनी चाहिए। फूड सेफ्टी पॉलिसी की नॉलेज होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक लेबर से, अपने यहाँ के एक वर्कर से जो शॉप फ्लोर में काम कर रहा है या जो लोड लोड उनसे जाके पूछोगे भाई कंपनी की फूड सेफ्टी पॉलिसी बताओ क्या कहती है, भले लोकल लैंग्वेज में बताओ लेकिन बताओ। नो, इट डजेंट मीन बिजनेस प्रायोरिटीज का मतलब ये है कि आपको इन चीजों पे भी फोकस करना है कि प्रायोरिटीज प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको चीजें करनी है। बिजनेस प्रायोरिटीज आपकी, आपका बायर कह रहा है कि सिस्टम सबको पता होना चाहिए, बट आपको फोकस उन्हीं चीजों में करना। रिस्क परसेप्शंस, रिस्क पे बहुत ज्यादा फोकस करना है कि कहाँ कहाँ पे रिस्क है, कौन कौन से रिस्क है। आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ से रिस्क आ सकते हैं आपके प्रोडक्ट में, हर स्टेप में पता होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सेफ्टी प्रोसीजर्स का पता होना चाहिए, नॉट ओनली प्रोडक्ट सेफ्टी, इवन ह्यूमन सेफ्टी आल्सो, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ये भी एक फूड सेफ्टी कल्चर का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, एलिमेंट है। कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपने फूड सेफ्टी टीम मेंबर, सपोज आपने फूड सेफ्टी टीम बनाई, आपने फूड सेफ्टी टीम मेंबर में आपने उन लोगों को लिया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मैनेजमेंट ने कहा है इसलिए हमने उसको टीम पे ले लिया, फूड सेफ्टी टीम में ले लिया, इंस्टीड ऑफ ये देखे बिना कि उनके पास नॉलेज है कि नहीं है, फूड सेफ्टी का इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस है कि नहीं है, वो सिस्टम को समझते हैं कि नहीं है, ये चीजें भी देखनी है। कॉम्पिटेंस लेवल आपको चेक करना है। लीडरशिप, लीडरशिप शेल बी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक मैनेजर होने का मतलब एक अच्छा लीडर होना नहीं होता है। It is not compulsory that every manager should be a very good and a strong leader. So you have to focus on that point also. Leadership skills. Leadership कैसी है आपकी, आपका सीनियर मैनेजमेंट कैसा है, आपके सीनियर मैनेजमेंट की कमिटमेंट कैसी है। आप ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप चाह रहे हो कंपनी में फूड सेफ्टी कल्चर को इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए आप अ, आपका सीनियर मैनेजमेंट से आप बार बार अपनी रिक्वेस्ट डाल रहे हो, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट दे रहे हो, वो आपसे एक कमिटमेंट कर रहे हैं बट उसका टाइमली वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो लीडरशिप आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, आपको एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट का ध्यान रखना है। मतलब आप, अगर आप लोग ये चाहते हो कि एक अच्छा सेफ्टी कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने हर एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से। चाहे वो आप किसी कुछ मीटिंग्स रखो, कुछ कुछ कॉम्पिटिशन्स रखो, क्विज रखो, कुछ उनके लिए कुछ रिकॉग्नाइजेशंस रखो, कुछ भी ऐसी चीजें रखो जिससे वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे फूड सेफ्टी से रिलेटेड। छोटे छोटे स्मॉल प्ले रखो और स्पोर्ट्स रखो, इस तरह की चीजें आप कुछ ना कुछ करो ताकि नॉलेज रहे। जब भी ऑडिट्स हो आपके यहाँ पे, जब भी आपके बायर ऑडिट हो रही हो, थर्ड पार्टी ऑडिट हो रही है, इंटरनल ऑडिट हो रही हो, तो ट्राई कीजिए कि आप सबको इन्वॉल्व रखिए।
ऑडिट शैल नेवर एवर बी क्लोज रूम, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बंद कमरे के अंदर कभी ऑडिट्स नहीं होती हैं कि आपने एक ओपनिंग मीटिंग के लिए आपने ऑफिस में एक बहुत शानदार सा मीटिंग रूम बना लिया है, वहां बैठ गए सारे के सारे फूड सेफ्टी टीम लीडर, टीम मेंबर और सीनियर मैनेजमेंट से प्लांट मैनेजर बैठ गया, और वहां बैठ के आपने बात कर लिया, आपका डिपार्टमेंट की ऑडिट ये करेगा, आपकी डिपार्टमेंट की ऑडिट वो करेगा, और वहां पे चैप्टर क्लोज, नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको अपने हर डाउन स्ट्रीम एम्प्लॉयज को अपने साथ इन्वॉल्व करके रखना है। जितना उसका कॉम्पिटेंसी लेवल है, जितनी उसकी नॉलेज है और जितना उसका इन्वॉल्वमेंट है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उतना आपको उसको इन्वॉल्वमेंट रखनी है, तभी उसका इंटरेस्ट बनेगा और तभी उसके बिहेवियर में, माइंड सेट में वो चेंजेस आएंगे। सेफ्टी ओनरशिप, सेफ्टी की ओनरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि चाहे वो ह्यूमन सेफ्टी हो, प्रोडक्ट सेफ्टी हो, वो हर तरह की सेफ्टी में आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बेसिकली आपके एलिमेंट्स हैं एक सक्सेसफुल फूड सेफ्टी कल्चर को, एक इफेक्टिव फूड सेफ्टी कल्चर को ऑर्गेनाइजेशन में लाने के। These are the things which we already discussed: leadership and management commitment. Importance of leadership in fostering a culture of food safety, it is very important. Strategies for engaging management in promoting the food safety culture. एम्प्लॉइज का एंगेजमेंट, एम्पावरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ क्रिएटिव तरीके से आप लोगों को इस तरीके से करके कि एम्प्लॉइज का एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट रहे। सेंस ऑफ ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी एम्प्लॉइज में होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहना चाहिए, ट्रेनिंग मेथड्स होने चाहिए एम्प्लॉइज को एंगेज करने के लिए। रिस्क अवेयरनेस एंड असेसमेंट, पोटेंशियल रिस्क जो भी है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड की हैंडलिंग में, ऑपरेशंस में, उनको पता करना, उनको अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीजों की नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट आपको कंडक्ट करने हैं ईच एंड एवरी स्टेप के, और उनके साथ साथ रिस्क असेसमेंट तो आपको करना ही करना है, और साथ ही साथ उनके प्रिवेंटिव मेजर्स जो होंगे उनको इम्प्लीमेंट भी करना है, उनके कंट्रोल मेजर्स आइडेंटिफाई करने हैं, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करना है। मतलब आपको ओवरऑल सिस्टम इस तरीके से डिजाइन करना है, हमेशा कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और वैल्यू एडिशन, ये चीजें वहां पे रहनी चाहिए। लर्निंग का एक अच्छा स्कोप होना चाहिए। चलिए एक दो पोल क्वेश्चंस और ले लेते हैं, अदरवाइज एलिमेंट्स वाला लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। सो वी कैन गिव स्टार्ट अगेन विथ one or two poll questions. Now I am expecting that you all will be get involved here, because poll questions में आप कोई, आपका ये एग्जाम नहीं हो रहा है पास और फेल का, बट थोड़ा सा आपको भी, हमको भी थोड़ा समझ में आता है, आपको भी चीजें क्लियर होती है, आंसर आप सही दे रहे हो गलत दे रहे हो उससे ज्यादा मैटर ये करता है आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। सो नाउ वी आर कमिंग हियर, फोर्थ क्वेश्चन। What are the four steps of food safety which we have discussed in the, I think, second or third slide? This is the question. Uh, just wait. I think there is some issue. Wait. Now, again, question is here. What are the four steps of food safety which we have discussed? First, clean, sweep, cook and chill. Clean, separate, cook and chill. Clean, sort, cook and chill. Clean, separate, cook and kill. So which is the right one? So now, four steps of food safety. 69% have replied clean, separate, cook and chill, and 5% clean, sweep, cook and chill. 3% clean, sort, cook and kill, and 23% clean, separate, cook and kill. So the right answer is clean, separate, cook and kill. So this is the right answer. Again, we are coming to one more question. How does senior management engage with food safety?
Very important question and very nice question. How does senior management engage with food safety? By implementing food safety independently, by learning more focus about food safety, fostering and promoting a culture of food safety, and none of the above. So now I am expecting the reply from all of you. 20 more seconds are there. Okay. So now I am ending the poll. Results: 78% fostering and promoting a culture of food safety, 14% by learning more about food safety, 5% none of the above, and 3% by implementing food safety independently. So the right answer is fostering and promoting a culture of food safety. See, senior management involvement matters that if they can promote the culture of food safety by encouraging the employees through recognitions, through trainings, through incentives, bonus, so many different things are there so that they will be get more interested and focus on food safety and its related requirements. Communication and implementing, how we can implement the food safety culture in the company, in the organization. So first thing, first step, assessing current culture. So first of all, we have to assess. सबसे पहले हमको ये assess करना है कि हमारी कंपनी का current culture और current food safety practices क्या हैं. उसके लिए हमको मेथड्स आइडेंटिफाई करने हैं, इवेल्युएट करने के लिए एग्जिस्टिंग फूड सेफ्टी कल्चर को ऑर्गेनाइजेशन में. सो क्या तरीके हो सकते हैं? आप में से कोई बताएगा? आप लोग चैट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं. ओनली टू मी, not to everyone, to me only, that to assess the current culture, क्या मेथड्स हो सकते हैं इवेल्युएट करने के लिए एग्जिस्टिंग फूड सेफ्टी कल्चर को इन दी ऑर्गेनाइजेशन. I am expecting the reply from all of you that what are the different methods to assess the existing food safety culture. आपको current food safety culture के बारे में पता करना है, कंपनी में क्या अभी स्टेटस है, क्या चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे प्लीज. Santosh is saying by taking survey feedback. Yes, absolutely right, Santosh. Kapil is saying investigation, taking interviews. Yes. Alok, Kaizen 5S training. 5S training. Yes. Ajay is saying by interviewing. Yep. Right. बिल्कुल सही. Now Pradesh is saying implementing Dropbox. Dropbox means you are saying okay, Dropbox. Yes, आप उसके थ्रू भी डाल सकते हो. Yes, this is the also a one way. Rashid is saying Kaizen, price distribution. No, I am asking कि आपको करंट, यानी जो आपका करंट, अगर आपको एक सक्सेसफुल कल्चर को इम्प्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको करंट में क्या आपका फूड सेफ्टी कल्चर है आपकी कंपनी का, ये पता होना चाहिए. So price distribution is a type to encourage the employees, but price distribution is not the method to evaluate the existing food safety culture, Rashid. Trainings and awareness. ये तो आप उनको आगे बढ़ाने के तरीके बता रहे हो. करंट को आपको पता करना है क्या तरीके हैं, क्या एग्जिस्टिंग मेथड है जिनके आप एग्जिस्टिंग कल्चर को पता कर सकते हो. फूड सेफ्टी मीटिंग. यस. फाइज इज सेइंग स्टाफ का इंटरव्यू करके. चेतना इस कह रही है इंटरनल ऑडिट. यस, इंटरनल ऑडिट के थ्रू भी कर सकते हो. एमआरएम. एमआरएम में एक्चुअली विवेक जी, एमआरएम में क्या होता है, जो हमने पूरे साल प्रैक्टिसेस की हैं उनका एक कंसोलिडेट मीटिंग्स होती हैं जिसमें कि हम जो हमने पूरे साल किया है वो एक्शन प्लान हम उधर पे शो करते हैं. तो अगर हमें करंट कल्चर को चेक करना है, यस, एमआरएम इज वन ऑफ द वे. कह सकते हैं यस, एमआरएम इज आल्सो वन ऑफ द वे. सत्यम इज सेइंग फूड सेफ्टी ऑडिट. यस. इब्राहिम इज सेइंग फीडबैक एंड सजेशन बॉक्स. हाँ, कर सकते हैं. पवन, फूड सेफ्टी अवेयरनेस. फूड सेफ्टी अवेयरनेस,
हमको यही तो चेक करना है, फूड सेफ्टी अवेयरनेस, यानी कल्चर इम्प्लीमेंट किस लेवल तक है, उनकी अवेयरनेस और नॉलेज कब तक है। राशिद इंटरनल ऑडिट्स कर सकते हैं, मोनिका एग्जामिन एम्प्लॉय प्रोग्राम्स कर सकते हैं, विपिन पाल फूड सेफ्टी अवेयरनेस ट्रेनिंग। नहीं, ट्रेनिंग के थ्रू हम एग्जिस्टिंग कल्चर को कैसे पता कर सकते हैं, आप इंटरव्यू के थ्रू, वो तो हमको जब एग्जिस्टिंग कल्चर का पता चल जाएगा उसके बाद हमें आगे जाके उनको अवेयरनेस लेवल और ये सब चीजें देनी पड़ेंगी। कैलाश इज सेइंग मॉनिटरिंग ऑफ द एम्प्लॉयज एक्टिविटी, perfect, yes, absolutely right, Kailash. Rashid, okay, Aanchal, training and evaluation. आंचल अगेन सेम थिंग, एग्जिस्टिंग सिस्टम को पता करने के लिए आप उनको ट्रेनिंग नहीं दोगे, वो किस लेवल तक ट्रेंड है उसकी कॉम्पिटेंसी आपको चेक करनी है। फूड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करके आप कल्चर को एसेस कैसे कर सकते हो, हमें तो बिहेवियर और माइंडसेट को देखना है ना भाई, आपकी कंपनी का करंट बिहेवियर क्या है, माइंडसेट क्या है, फूड सेफ्टी को लेके क्या है। तो पॉलिसी तो एक बार बन गई जो सब जगह सर्कुलेट हो गई, आपको तो ये देखना है कि ये पॉलिसी किस तरीके से सक्सेसफुली डाउन स्ट्रीम तक इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। विवेक इवेल्युएशन ट्रेनिंग आप उसको एग्जामिनेशन कह सकते हो, फीडबैक कह सकते हो, बट ट्रेनिंग मतलब यू आर ट्रेन, यू कैन ट्रेन समवन। कपिल मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शंस, हाँ ये कर सकते हैं। मोनिका एग्जामिन एम्प्लॉय प्रोग्राम्स, ये कर सकते हैं। कैलाश इज सेइंग रिव्यू ऑफ द मार्केट सैंपल इवेल्युएशन कर सकते हैं। इब्राहिम कंप्लेन ट्रेंड्स, यस ऑफ कोर्स। गणेश हाउ इज आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट, यस ये कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। आज पवन जीएमपी एंड जीएचपी ट्रेनिंग, अगेन आई एम सेइंग ट्रेनिंग हम एग्जिस्टिंग मेथड के इवेल्युएशन के बाद देंगे। सर्वे एंड क्विज ऑन करंट कल्चर फॉलोड बाय एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, यस। रशीद randomly workers awareness checking on shop floor, yes। Raju monitoring corrective action verification communication, yes, this is also one of the way। गणेश गणेश जी पहले आप बताइए तो कि हम जो पूछ रहे हैं ये तो मटेरियल तो आपको ऑब्वियसली यू गेट। Yeah, hello. राइट, हाँ जी सर। Yeah, good evening. Myself, Ganesh. Hello. यस सर, जी Yeah, बताइए। good evening, madam. Good evening. Myself, Ganesh. From Hyderabad. Currently, I am यस। working in Vibrant Living Private Limited. So, as a junior manager, quality warehouse logistics. So, I have one doubt: how to implement food safety culture in food industry? Is there any SOP? If you have, please kindly share it, madam. Because we don't have any food safety culture in our industry, so I am trying to implement this food safety culture, but I need some SOP, madam. Like if you have anything, if you possible, kindly share it, madam. गणेश जी अभी जो मैंने क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड एक्चुअली व्हाट क्वेश्चन एग्जैक्टली राइट नाउ आई एम आस्किंग, दैट हाउ इवैल्यूएट द current scenario, current status of your food safety culture in your organization, or means if I can ask a question to you, how you can evaluate the current food safety culture status in your organization, how you can evaluate, how you can identify that right now where is it your company in case of food safety culture. This is my question. So it's my request to you, you please write down to me in a chat box like others which they are replying, that how you can currently evaluate. So for example, you told me that in your organization right now there is no any food safety culture, right? Yes, So madam. how you Present we don't have any food safety culture, madam, because of how lack of awareness, madam, on food safety culture. So that is sir, my you can concern. write down in a chat box because lots of participants are here. So one by one I can read. It will be easy for me, even for others also, that how you can say that right now the food safety culture is very low and ineffective in your organization. So how you can identify it? This is only my question. Madam.
Madam, I have one doubt, madam. May I ask one doubt? Yeah, please, you can ask. Yeah. Madam, for example, if you don't have food safety culture, then what is the impact on food safety culture in food industry? Sir, if there is no any food safety culture in the company, even people are not aware, if the system is not implemented, it means that you cannot ensure your consumer that you can provide the safe product to your customer as well as your consumer. Okay, okay. I got it, madam. Point. Okay, right. Okay? One more doubt, madam. Yes. Madam, basic, what is the food safety culture mean? What is the definition mean food safety culture? Sir, you joined recently, No, madam. Ganesh ji? I have some experience, madam. I have worked No, no, in no, no. different. This workshop you joined recently or some time back because I have What, madam? I already can't understand. discussed. Again, tell me, madam. I can't understand. What I am asking that I have started this workshop almost 30 minutes. We already almost 50%, 60% of slides have been finished. So my question is, you joined Yes, madam. recently? Just 5 minutes back, I have joined, madam. Okay, so If it is Ganesh ji, possible, listen. kindly share, madam, material. Because Yeah, of yeah. it is Ganesh ji, listen. Once the training will be get finished, then the complete recordings, everything, I will let you know from where you get. So from there, you will get the complete presentation detail. Okay? Sure, madam. All the Thank you. recording. Yeah. Thank you so much, madam. Yeah, continue, madam. Okay, I will listen. Yeah. Thank you, Yeah, Ganesh ji. yeah, sure. So now, survey and quiz, Rashid randomly one. Shubham, internal audit. Yes, internal audit is the one way. Mr. Zadi, surprise audits. Yes, perfect. Surprise audit is also one of the way. Record keeping process. Yes, that's also. Please, you all mute yourself. Please, Ganeshi, you please mute yourself. Yeah, madam. 1 minute, 1 minute. Aisha, Aisha is saying verify with GMP and GHP sheet. Yeah, record verification is also one of the way. But on-site verification is always the effective way to evaluate the food's existing food safety culture. Komal is saying monitoring for current level. Kailash, my voice is not clear to you. Is my Yeah, proper yeah, audible? audible, madam. Your voice audible. Yeah. You Okay. can continue, madam. No issue. Ganesh, okay, fine. Thank you. So now, most of you have given the right answer. So first step is we can first of all we have to assess the existing food safety culture in organization. सबसे पहले हमको एग्जिस्टिंग फूड सेफ्टी कल्चर को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है उसका पता करना है देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट उसके बाद हमको हमारी कंपनी के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ क्या है और वीक पॉइंट्स क्या है उनको लिस्ट आउट करना है उनको आइडेंटिफाई करना है विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द implementation of food safety culture in your company. So these are it is the first step. Now we are coming to the second step, developing a food safety culture plan. उसके बाद हमारी कंपनी के करंट स्टेटस को देखते हुए वीक एंड स्ट्रेंथ पॉइंट सॉरी वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रेंथ को देखने के बाद आफ्टर दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट फूड सेफ्टी कल्चर प्लान हमें सेफ्टी कल्चर प्लान को इम्प्लीमेंट करना है सो फॉर द सेम स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव फूड सेफ्टी कल्चर प्लान हमें उसमें सारे स्टेप्स नोट डाउन करने हैं फूड सेफ्टी कल्चर प्लान के ताकि किस तरीके से हम अपने प्लांट में इसको डेवलप करेंगे वी हैव टू सेट द गोल्स हमें गोल्स सेट करने हैं डिफाइनिंग द रोल्स हमें रोल्स डिफाइन करने हैं एंड एस्टेब्लिश की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और साथ ही साथ हमको गोल्स को सेट करने के साथ रोल्स को डिफाइन करने के साथ हमें KPIs भी आइडेंटिफाई करनी है फूड सेफ्टी कल्चर इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज until or unless proper KPIs you cannot say the system cannot be effectively implemented. Communication and then the step 3 is communication and training strategies.
अब आपने सिस्टम अपना करंट चेक कर लिया, आपने एक प्रॉपर प्लान बना दिया, आपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रेंथ को काउंट करके, देन कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग स्ट्रेटेजीज, फिर हमें हमारे कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग स्ट्रेटेजीज पे काम करना है. So there should be proper and effective communication methods are there to promote the food safety culture. हमारे पास प्रॉपर कम्युनिकेशन मेथड्स होने चाहिए प्रमोट करने के लिए फूड सेफ्टी कल्चर को. सो व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स, प्लीज आप लोग सिर्फ मेंशन कीजिएगा चैट बॉक्स में, because I only want the answer either in the chat box only, that what are the different effective communication methods to promote the food safety culture in the organization. अजय जी, केपीआई अगर मेजरेबल हो तो बेटर होती है, नहीं तो आप केपीआई को कैसे, मतलब आप कैसे इवेल्युएट करोगे, क्या कैसे आप उसको मॉनिटर करोगे, कैसे आप उसको चेक करोगे कि केपीआई प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो रही है इफेक्टिवली कि नहीं हो रही है. सो यस, दिस इज द रिकमेंडेड प्रैक्टिस टू मेक केपीआई ऑलवेज मेजरेबल. सो नाउ हेलो हेलो यस, हाँ मैम, मुझे कोई एक डाउट हो. फॉर एग्जांपल ये स्टेप्स आइडेंटिफाई करने के टाइम में इंडिविजुअल करना और विथ ग्रुप हो. सर आप इंडिविजुअल कभी भी के अंदर फूड सेफ्टी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ऑलवेज एंड ऑलवेज इट शुड बी इन द टीम. Team mean we are different. We should form different departments now, mechanical or Yes, quality yes. production, It should HR be always. department. Yeah. Yes, Got yes. it. Yeah, got it. Go ahead, madam. Proceed. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि आपको रिप्रेजेंट, आपको सबके काम डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करनी है डिपार्टमेंट वाइज, एम्प्लॉइज वाइज. जितेंद्र जी, आपको किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे रहे हो, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन डेडिकेट टू विच पर्सन, दिस इज द थिंग. राशिद इज सेइंग display board. Yes, display board is one of the way for communication. Ajay ji is saying training, signages, do's and don't. Yes, absolutely right. Anchal is saying visual aids, imparting training through audio visual aids. Perfect, absolutely right. Alok, monitor, feedback and review. Yes. So these are the different effective communication methods, do's and don't, display, trainings, communications through some interactive sessions. Through all these things, we have to effectively communicate the and promote the food safety culture in the company or the organization. Training programs and techniques to educate and empower the employees. Cultural dimensions. So now hazard and what type of awareness which we need to give to them. Sorry. Hazard and risk. So I think अभी छोटा सा एक पोल और ले लेते हैं, so that I should also be get know that how much you are aware here about this. What does consistency helps in food safety culture? Very important question. What does consistency help in food culture? Accountability, engagement, leadership and learning. More replies we are expecting. What does consistency help in food culture? Okay, so now I'm just giving the answer. Consistency
This is the what does consistency helps in food safety culture. 19% are saying accountability, 37% are saying engagement, leadership 19%, 26% learning. So of course engagement. Always the engagement is necessary to make the things interactive. So now again hazard and risk awareness. Foundational hazard information and education, employee engagement, verify hazard and risk awareness. This is also a part of food safety culture. Vision and the mission, business structure, values and purpose, setting direction and expectations, leadership and messaging. People means who are directly or indirectly involved with the organization, like stakeholders, governance, communication, learning organization, incentives, rewards and recognitions. If the people will get this all properly, then definitely a successful food safety culture is implemented in the organization. Adaptability, food safety expectations and culture state change. Sorry, change the crisis management and change the crisis management and problem solving. And for the consistency, documentation, performance measurement, and the accountability. So these are the things which, if we will implement all of them, then the successful food safety culture can be implemented in the organization. So hazards and risk assessment, as we have already discussed. Hazard, and if we are talking about the hazard and risk assessment awareness, so in the case of food safety, so first of all we have to role specific risk competencies, food safety near miss system, foundational hazard information and the education, employees engagement, verify hazard and the risk awareness, then vision and the mission. Food safety is integrated into the business strategy, resource allocation and the priorities, organizational structure and the expectations, which include the business structure, values and purpose, setting direction and expectations, leadership and messaging. Adaptability. Adaptability cover the change model, understand cultural differences, food safety expectations and current state, agility, change, crisis management, and the problem solving. Consistency included the accountability, performance measurement, and the documentation, and people, stakeholders, governance, communication, learning organization, incentives, rewards, and the recognitions. So these are the things which need to get. This is the vision and mission of the food safety culture. People cover means if we are talking about the people who are directly or indirectly involved in the food safety culture as stakeholders, your governance, your communication, learning organization, incentives, rewards, and the recognition, ABC model for behavior change. So these are the things which we need to consider if we are talking about the people. Adaptability. Adaptability cover food safety expectations and the current states, agility, change crisis management and problem solving, change model, understand cultural differences. So now I will give you few examples with strong food safety culture in their organization, with strong food safety culture implementation in their company, in their organization. Few examples we are discussing here, like Nestle. Nestle, a multinational food and beverage company, has a strong focus on food safety culture. They are focused on food safety culture, and the company has established
Quality Management System (NQMS), which include stringent standards, policies, and procedures to ensure food safety at every stage of the supply chain from farm to fork. And Nestle can promote a culture of continual improvement, employee empowerment, and accountability through comprehensive training programs and regular audits. So basically, the Nestle food safety culture is almost, you can say, 90-95% dependent upon the training programs, regular audits, as well as employee welfare. They also we get very closely involved. Mars. Mars Incorporated, a leading global food manufacturer, places a strong emphasis on food safety culture, and the company has implemented the QMS, Mars Quality Management System, which encompasses strict quality standards, supplier requirements, and employee training programs. And the Mars actively collaborate with suppliers, conduct risk assessment, and promote continuous involvement in food safety practices. So these are the requirements from Mars, and these are the companies which are very strictly involved and successfully implemented the food safety culture in their company, in their organizations. So now, before just I can just give you few examples so that this is my practical my own experience. This is my own experience in the industries. Very recently, only I think 2 months back, I have faced one BRCGS compliance audit. It is directly from BRCGS, and the auditor from BRCGS came and conducted audit in one of the site where I have already audited as a BRCGS auditor last year. So what happened in that audit? BRCGS focused more and more on food safety culture as compared to other points. Means when they started inside the organization, when they entered inside the organization, their first question from security guard was that. Uh, you are just taking my signature here as a visitor, and these documents which you are giving to me, so is it you are giving to me only? ये सिर्फ आपने मेरे लिए रखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट को, कि आप इसको एक डेली रूटीन में आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो, और ये आपके सिस्टम में है, आपको किसने बताया इसके बारे में, और बताया तो कब बताया, आपने किस तरह से इसकी ट्रेनिंग ली हुई है, आपको कितनी नॉलेज है इसके बारे में, और मैं क्या करने आया हूँ आपकी कंपनी में, कि आपको इसके बारे में पता है, आपको इसके बारे में नॉलेज है. So from that point, BRCGS has started their first question. So now you can understand. फिर उसके बाद when they entered inside the organization, then 90% of time that person has devoted in the shop floor. And in the shop floor, 100% of their questions were related to the food safety culture. क्योंकि जीएफएसआई का अब ऐसा मानना है, बायर्स की ऐसी सोच है कि अगर आपके कंपनी में फूड सेफ्टी कल्चर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड है, अच्छे से इम्प्लीमेंट आपने सिस्टम में किया हुआ है, तो इस केस में फिर आपको कहीं और जाने की या फिर अलग से सिस्टम को, अलग अलग चीजों को, मतलब if I want to ask you about the training, if I want to ask you about the internal audit, if I want to ask you about the supplier audits and all these things, so in that case, instead of asking the things separately, they are saying that we can start asking about the food safety culture. What is the meaning of food safety culture? वो कैसे implement कर रहे हैं? आपका और आपके मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट क्या है, और आपकी मैनेजमेंट कितना ज्यादा इन्वॉल्व है आपके साथ हर चीजों में. So these are the things which they can check, which they can consider, instead of asking the things के ओपनिंग मीटिंग में सीनियर मैनेजमेंट होना चाहिए, क्लोजिंग मीटिंग में सीनियर मैनेजमेंट होना चाहिए. नो, नाउ दे आर नॉट आस्किंग लाइक दिस. वो डायरेक्ट सीनियर मैनेजमेंट में जो भी बंदा होता है उनसे क्वेश्चन करते हैं. दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, सर आपको पता है लास्ट ईयर जब आपकी ऑडिट हुई थी बीआरसीजीएस फूड की या एफएसएससी 22,000 की, तो उस वक्त कितनी नॉन कन्फर्मिटीज आई थी,
चलिए काउंटिंग हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन कुछ आइडिया है किस तरह की नॉन कन्फर्मिटीज आई थी? और ओके, सपोज XYZ नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम 10 थी। सो इन 10 नॉन कन्फर्मिटीज में हाउ यू कैन रिजॉल्व दिस, आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, रिसोर्सेज आपने किस तरह से प्रोवाइड किए हैं, टाइमली प्रोवाइड किए हैं कि नहीं किए हैं, और आपका आप लोगों ने जो ऑडिट्स में एक्शन प्लान सबमिट किया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है, कि एम्प्लॉइज इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, आपके जो प्लांट में रिसोर्सेज हैं, आर यू सेटिस्फाइड कि जो आपने रिसोर्सेज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड किए हुए हैं दे आर सफिशिएंट, और आपके जो सॉफ्ट फ्लोर में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं दे आर हैप्पी टू वर्क देयर, आपने उनको मोटिवेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए क्या क्या चीजें आप कर रहे हो, उनको कैसे मोटिवेट करते हो, आप किस तरह से उनको सपोर्ट करते हो। सो दीज आर द थिंग्स विच now started asking from your buyers, from your certification bodies, as well as your GFSI forum like BRCGS and FSSC 22000. So basically, the one line concept is that meaning of food safety culture is that uh, do when no one can see, जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब अगर आप सिस्टम को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके नेचर में आ गया है, वो आपकी एक डेली हैबिट में आ चुका है, वो आपके बिहेवियर में आ गया है, एंड फ्रॉम द डे when it can implemented in your when it will come in your nature, your behavior, your mindset, your attitude, it means that कि अब आपने अपनी कंपनी में, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फूड सेफ्टी कल्चर को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सॉफ्ट फ्लोर में अगर सपोज HR का बंदा गया है किसी काम की वजह से, इफ सम HR पर्सन इज गेट एंटर्ड इनसाइड द सॉफ्ट फ्लोर इन द प्रोडक्शन एरिया, और वहां पे उन्होंने देखा कि वेस्ट बिन है, उसमें लाइनर तो लगा है बट उसका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ओपनिंग क्लोज होने का वो नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ उसको बाईपास करके कि यार मेरा काम थोड़ी है, प्रोडक्शन का बंदा देखेगा ये, कल के दिन पूछा जाएगा तो उससे पूछा जाएगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इमीडिएटली वो वहां नोट करे, और नोट करने के बाद जो ऑथराइज पर्सन हो, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको जाके बताए, और इमीडिएटली उसको बताया कि आपके उस जगह पे ये प्रॉब्लम मैंने देखी है, आप उसको रिजॉल्व कर लो, अदरवाइज वो हमारे फूड सेफ्टी में इम्पैक्ट डालेगा। जिस दिन हमारा माइंडसेट इस तरीके से काम करना शुरू कर देता है, फ्रॉम दैट डे वी आर नाउ सेइंग कि नाउ वी हैव इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड द फूड सेफ्टी कल्चर इन अवर कंपनी, इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। सो पहले तो नहीं, मतलब अब राइट नाउ व्हाट द BRCGS इज इवन डूइंग, BRCGS ने BRCGS अप्रूव्ड प्रोग्राम्स लाने शुरू कर दिए हैं रिलेटेड टू फूड सेफ्टी कल्चर। सो नाउ इफ यू नाउ फ्रॉम माय साइड, दिस इज अ वेरी स्मॉल, बिकॉज ये एक छोटा सा वेबिनार था आप लोग को एक बेसिक अवेयरनेस देने के लिए कि व्हाट इज फूड सेफ्टी कल्चर। आप में से ऑलरेडी अगर कोई BRCGS प्रोफेशनल है तो इस ट्रेनिंग को एज ए रिकॉर्ड रख सकता है, उनके स्कोरिंग में हेल्प करेगा ये। आप अपने प्लांट में अगर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं आइदर वर्जन 6 ऑफ FSSC 22000 और BRCGS, सो प्लीज स्टार्ट फोकसिंग ऑन फूड सेफ्टी कल्चर। सबसे पहले प्लांट का असेसमेंट कीजिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को चेक कीजिए, लोगों की सोच को चेक कीजिए। करेंटली ध्यान रखिएगा ये चीज, बिहेवियर, माइंडसेट, एटीट्यूड क्या है लोगों का, उसके बाद आप सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिएगा, बिकॉज ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। एज ए ऑडिटर मैं जब कहीं किसी कंपनी में ऑडिट करती हूँ तो एक कॉमन सा प्रॉब्लम होता है कि वहां हम देखते हैं कि वो 1 और 2 मैन आर्मी होता है पूरा का पूरा ऑडिट, एक फूड सेफ्टी टीम लीडर होता है, उसके साथ 1-2 लोग होते हैं, पूरी ऑडिट फिनिश हो जाती है। अब ऐसा नहीं होगा, इफ इट विल बी हैपन देन डेफिनेटली इट वुड बी अ नॉन कन्फर्मिटी, बिकॉज एज ए ऑडिटर food safety culture the auditor will check, and as a auditee you have to implement this food safety culture to focus more. If you want to get more detail about the food safety culture, अगर आप food safety culture के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डिटेल से चीजों को जानना चाहते हैं, तो आप लोग BRCGS के जो प्रोग्राम्स होते हैं फूड सेफ्टी कल्चर को, उनको आप अटेंड कीजिए, उनको समझिए, उनको देखिए। कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, यू कैन आस्क टू मी इवन आल्सो। इफ यू आर डूइंग समथिंग इन योर कंपनी,
अगर आप अपनी कंपनी में फूड सेफ्टी कल्चर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ कंसर्न है, यू कैन आस्क टू मी आल्सो, so you get the idea. So now abhi aap log please, now you can just raise your hands or just write down your questions in the chat box, so one by one I can reply. Please, you can ask.